Tune into Sports 360 with Ahmed Hamad. न्यूजीलैंड और श्रीलंका की क्रिकेट टीमों के दरमियान 3 टी20 मैचेस की सीरीज के पहले मैच न्यूजीलैंड ने श्रीलंका को 8 रन से शिकस्त दे दी। जी हाँ, माउंट मैग्नॉय में खेले गए इस पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पहले बैटिंग की और पहले बैटिंग करते हुए मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 172 रन बनाए और जवाब में श्रीलंका की टीम मैच जीतने के करीब आ चुकी थी और मुकर्रर 20 ओवर्स में 8 विकेटों के नुकसान पर 164 रन बना सकी और सिर्फ 8 रन से इन्हें मैच में शिकस्त का सामना करना पड़ा। माइकल ब्रेसवेल और डैरल मिचेल के दरमियान एक पार्टनरशिप है 105 रन की 6ठी विकेट की, जो कि न्यूजीलैंड की जानिब से नया रिकॉर्ड है। इससे पहले 6ठी विकेट के पार्टनरशिप का रिकॉर्ड था 85 रन का ब्रैंडन मैकलम और लूक क्रॉन्ची के दरमियान, जो अब नया रिकॉर्ड है 105 रन का बिटवीन माइकल ब्रेसवेल एंड डैरल मिचेल। इस मैच की दोनों इनिंग में देखा जाए तो 100 रन की पार्टनरशिप है। न्यूजीलैंड की जानिब से 6ठी विकेट की पार्टनरशिप में 105, श्रीलंका की जानिब से पहली विकेट की पार्टनरशिप में 121। इतना अच्छा आगाज मिलने के बाद श्रीलंका ने तकरीबन मैच थ्रो कर दिया। मैच जीतना चाहिए था श्रीलंका को, लेकिन न्यूजीलैंड के बॉलर्स को भी क्रेडिट देने के छोटा टोटल उन्होंने डिफेंड करके दिखाया। तो जनाब, इस मैच में श्रीलंका के कैप्टन चरित असलंका ने टॉस जीतकर न्यूजीलैंड को पहले बैटिंग की दावत दी। न्यूजीलैंड ने अपनी इनिंग का आगाज किया तो 20 के स्कोर पे चौथे ओवर की तीसरी बॉल पे न्यूजीलैंड को पहले विकेट का नुकसान उठाना पड़ता है। टिम रॉबिन्सन आउट होते हैं। कॉर्डन बोल्ड बाय फर्नांडो, 11 रन बनाए इन्होंने, 9 गेंदों का सामना किया, 2 चौके इनकी इनिंग में शामिल थे और 122 इनका स्ट्राइक रेट। दूसरी विकेट 1 ही रन का इजाफा होता है। रचिन रविंद्रा आउट हो जाते हैं चौथे ओवर की आखिरी बॉल पे। न्यूजीलैंड का स्कोर 21 और रचिन रविंद्रा सिर्फ 8 रन बना पाए। 14 गेंदों का सामना किया, 57 इनका स्ट्राइक रेट। ही वॉज कॉट बाय मेंडिस ऑफ द बॉलिंग ऑफ फर्नांडो। फिर तीसरी विकेट 39 के स्कोर पे गिरती है और जो हम पार्टनरशिप की बात कर रहे हैं न्यूजीलैंड की जानिब से, पहली विकेट पे 20, दूसरी विकेट पे 1, तीसरी विकेट पे 18 रन की पार्टनरशिप होती है 16 गेंदों पे और तीसरी विकेट इनकी मार्क चैपमैन आउट होते हैं। इन्होंने 15 रन बनाए, 13 गेंदों का सामना किया, 1 चौका इनकी इनिंग में शामिल, 115 इनका स्ट्राइक रेट। कॉट बाय मेंडिस ऑफ द बॉलिंग ऑफ पथिराना। चौथी विकेट जो है वो 65 के स्कोर पे ग्लेन फिलिप्स 10वें ओवर की चौथी बॉल पे आउट होते हैं। बोल्ड लेग बिफोर कर दिया इनको हसारंगा ने। इन्होंने 9 गेंदों पे 8 रन बनाए, 88 इनका स्ट्राइक रेट। लेकिन 4 खिलाड़ी 65 के स्कोर पे वापस 10 ओवर में और फिर 5 विकेट 65 ही के स्कोर पे। मिचेल हे आउट होते हैं 10वें ओवर की 5वीं बॉल पे और आधी टीम 65 के स्कोर पे। मिचेल हे बगैर कोई रन बनाए पहली बॉल पे लेग बिफोर हो जाते हैं। लेकिन उसके बाद से 6ठी विकेट की पार्टनरशिप 105 रन की 60 गेंदों पे, एग्जैक्टली 10 ओवर में 105 रन, जिसमें माइकल ब्रेसवेल ने 32 गेंदों पे 59 और डैरल मिचेल ने 28 गेंदों पे 42 रन बनाए और अपनी टीम का टोटल लेकर जाते हैं 170 पे 20वें ओवर की तीसरी बॉल पे। यहाँ डैरल मिचेल आउट होते हैं, 62 रन बनाए 42 गेंदों पे, 4 चौकों और 2 छक्कों की मदद से 148 के स्ट्राइक रेट के साथ इनको स्टंप कर दिया मेंडिस ने। बॉलर थे महेश टिक्षाना और फिर 7 विकेट 171 के स्कोर पे। माइकल ब्रेसवेल जो पार्टनरशिप कर रहे थे इनके साथ, वो भी साथ ही साथ आउट होते हैं 1 ही रन के इजाफे के बाद 20वें ओवर की 5वीं बॉल पे और माइकल ब्रेसवेल ने 59 रन बनाए 33 गेंदों पे, 4 चौकों और 4 छक्कों की मदद से 179 के स्ट्राइक रेट के साथ एंड ही वाज कॉट बाय Mendes of the bowling of Mahesh Tikshana. Then New Zealand lost their 8th wicket at 172. So wickets in clutter 170 for 6, 171 for 7 and 172 for 8. Zachary Fox was the last man to go, these 8 batsmen, and he was run out by Mendes for 1. In the end, Mitchell Sattler, who was captain of New Zealand, remained unbeaten on 1. But the 6-wicket partnership of 105 from 60 balls between Daryl Mitchell and Michael Bracewell enabled New Zealand to put a decent total on the board. They scored 172 for the loss of 8 wicket in their stipulated 20 overs and they scored their runs at a run rate of 8.60. New Zealand batsmen hit 6 sixes and 11 fours. Apart from Daryl Mitchell and Michael Bracewell, Mark Chapman also scored 15 and Tim Robinson 11. None of the other batsmen could even reach the double figures. For Sri Lanka, Nuwan Toshara, 4 overs, 28 runs and no wicket. His economy was 7. He bowled 8 dot balls and he was hit for 2 fours. He also bowled 3 wide balls. Wanindu Hasaranga, 4 over, 22 runs and 2 wicket. He was economical, 5.50 was his economy. He bowled 10 dot balls and was hit for only 1 6. Mahesh Tikshana, 4 overs, 29 runs and 2 wicket. His economy was 7.25. He bowled 8 dot balls and he was hit for 4 fours. Matisha Pathirana,
4 overs for 60 runs and 1 wicket. He was very expensive. His economy was 15. He bowled just 2 dot balls. He was hit for 4 fours and 3 sixes. He bowled 1 wide and 3 no balls as well. Wanindu Hasaranga bowled 4 overs, gave away 33 runs and captured 2 wickets. His economy was 8.25. He bowled 7 dot balls. He was hit for 1 fours and 2 sixes. In reply, Sri Lanka chasing a target of 173. Their start was brilliant. Their opening stand was of 121 from just 13.2 overs, but they lost their first wicket at 121. Kusal Mendis was first to go, caught by Mitchell Hay, the wicketkeeper of the bowling of Duffy. He scored 46 runs from 36 balls, hitting 6 fours and 1 6, and his strike rate was 127. And next to go was Kusal Perera. Faced 2 deliveries but could not open his account. He was caught by Hay of the bowling of Duffy without scoring. Third to go was Kamindu Mendes in the 14th over, and Sri Lanka were 121. So they lost their 3 wicket at the same total, 121 for 1, 121 for 2 and 121 for 3. Kamindu Mendes was the third to go, and he was also out on the very first ball, caught by Mitchell Hay, wicketkeeper of the bowling of Duffy. Then they have a partnership of 24 runs and they took their total to 145, and Charith Asalanka was the fourth to go, the captain of Sri Lanka in the 18th over, and he scored only 3 runs from 7 balls. He was caught by Michael Bracewell of the bowling of Zachary Fuchs. Then they lost the wicket of Pathum Nissanka at 153 in the 19th over, and Pathum Nissanka, the highest scorer for Sri Lanka, made 90 runs, and they were heavily relying on him to take them home, but he was out, and he was the 5th batsman to go at 153 in the 19th over, scoring 90 from 60 ball, hitting 7 fours and 3 sixes with a staggering strike rate of 150, but was out. He was caught by Robinson of the bowling of Matt Henry. 6 to go was Bhanuka Rajapaksa in the 19th over. Sri Lanka were 154, and Bhanuka could only score 8 runs from 5 balls, hitting 2 fours. He was bowled by Matt Henry. 7 to go was Mahesh Tikshana in the 20th over. Sri Lanka were 159, and Mahesh Tikshana could only score 1 run from 2 balls, caught by Duffy of the bowling of Zachary Fuchs. And the 8th batsman to go was Wanindu Hasaranga. He made 5 runs and was run out by Fuchs, and Sri Lanka managed to score only 164 for the loss of 8 wicket in their allotted 20 overs, and they scored their runs at a run rate of 8.20 runs. Sri Lankan batsmen hit 4 sixes and 16 fours. Looking at the New Zealand bowling, Matt Henry, 4 overs for 28 runs and 2 wicket. His economy was 7. He bowled 10 dot balls and he was hit for 4 fours. Jacob Duffy, 4 overs for 21 runs and 3 wicket. 5.25 is his economy. He bowled 13 dot balls and was hit for only 2 fours in 4 overs. Zachary Fuchs, 4 overs for 41 runs and 2 wicket. 10.25 is his economy. He was hit for 6 fours and 1 6. Mitchell Satner, 4 overs for 26 runs and no wicket. 6.50 is his economy. Michael Bracewell, 3 overs for 30 runs and no wicket. Exactly 10 is his economy. He was hit for 2 sixes. And Rachin Ravindra bowled 1 over, gave away 14 runs, was hit for 1 4 and 1 6. Jacob Duffy of New Zealand, who captured 3 for 21 from his quota of 4 overs, was declared man of the match. Keep on watching Sports 360 with Ahmed Hamad for latest news, views, and interviews of sports personalities from around the world.